Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. So for today, the first idiom is to pay off old scores. Paying off ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है कि आप अपने पुराने कह सकते हो पुराने हिसाब चुकता करना. ठीक है, तो दैट रेफर्स टू पेइंग ऑफ ओल्ड स्कोर्स विच मीन्स टू टेक रिवेंज. टिपिकल मूवीज जो होते हैं उसमें होते हैं कि मुझे अपना पुराना हिसाब बराबर करना है या पुराना हिसाब कह सकते हो कि पुराना हिसाब किसी को दिखाना है, देना है. वो सब चीज़ें अगर आपको सामने बोली जाती है या फिर आपने किसी मूवी में देखा है किसी एक्टर को या किसी विलन को बोलते हुए, तो दैट रेफर्स टू व्हाट, टेक अ रिवेंज. ठीक है, सो what we can say is we can say that she felt like she was paying off old scores when her former मतलब पहला, अब बॉस नहीं है, former boss apologized to her. ठीक है, तो उनको लगा कि वो अपना पुराना हिसाब बराबर कर रहे थे. कैसे कैसे पुराना हिसाब बराबर हो रहा था? शी वाज, जब उनके फॉर्मर बॉस ने क्या किया, उनसे अपोलोजाइज किया, माफी मांगी, तो उससे रिलेटेड आप कह सकते हो. एक और बात होती है कि आप इसका सेंटेंस जो है वो टिपिकल मूवी से रिलेटेड यू कैन मेक. ठीक है, कोई टिपिकल मूवी आपको याद आ रही हो तो उसमें रिलेटेड आपने डायलॉग सुना हो तो आप कह सकते हो. या तो विलन कह रहा होता है या फिर कोई हीरो होता है वो कह रहा होता है. तो आई बिलीव इज कि हर कोई अपनी स्टोरी में इज अ हीरो एंड द अदर पर्सन और द पर्सन अगेंस्ट इज ऑलवेज अ विलन. तो विलन भी अपनी स्टोरी में हीरो ही होता है. तो दिस इज माई थिंकिंग. अब मुझे नहीं पता वॉट यू गाइज थिंक एंड हाउ यू गाइज फील अबाउट समथिंग. ओके, then we have the next idiom which says to pay through nose. अब देखो, आपने सुना होगा कि अभी एक ऐसा दौर आया था जब सबको आईफोन चाहिए था. आईफोन चाहिए रहने के लिए पीपल वर doing what, they were either selling their kidneys or they were selling their lungs, eyes or whatever in order to get that iPhone. Okay, तो अब उन्होंने अपना बॉडी का कोई पार्ट बेचा so that they can buy iPhone. मतलब आईफोन इतना महंगा रहा होगा ना उस दौरान. तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? पे थ्रू नोज. नोज दे दो एंड यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न. सो दैट रेफर्स टू व्हाट, पेइंग थ्रू नोज. मतलब नोज भी आपकी है, माना कोई लेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी नाक है, कौन ही लेगा. पर लेकिन होता क्या है कि इफ यू आर पेइंग थ्रू एनी ऑर्गन ऑफ योर्स, तो दैट रेफर्स टू यू आर पेइंग द वेरी हाई वैल्यू. ठीक है, तो उसको बोल सकते हो क्या, पेइंग एक्सट्रीमली हाई प्राइस कह लो या फिर यू कैन से इट वैल्यू. ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में पे कर रहे हो तो व्हाट विल यू से इट, यू विल से दैट यू आर पेइंग थ्रू नोज. जैसे कि people are paying through nose for housing in that area due to high demand. डिमांड इतनी ज़्यादा हाई है कि लोग अपने हद से ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है. आप सोचो कोई अर्बन एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है, स्कूल भी पास ही में है और हॉस्पिटल भी पास ही में है, मॉल्स वगैरह सब एकदम परफेक्ट लोकेशन एकदम है. तो उसके लिए लोग लेते हैं ना हाई प्राइस, और लोग पे भी करते हैं हाई प्राइस. ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं, पीपल आर पेइंग थ्रू नोज for housing in that area. So this refers to what, paying through nose.
नाउ ये भैया जी कहाँ से आ गए, चलिए, मूविंग ऑन टू द थर्ड इडियम विच सेज, द थर्ड इडियम टू, okay, to pigeonhole someone, this refers to typecast someone. टाइप कास्टिंग समवन का मतलब होता है कि ये इस कैटेगरी का होगा, इसे क्या ही आता है, ठीक है, तो वैसे नहीं करना। अब जैसे आप देखो बहुत सारे सिंगर्स हैं, दो दे आर सिंगर, दैट इज एन आर्ट, डिफरेंट आर्ट, पर ऐसा नहीं है दे कैन नॉट एक्ट, है ना। तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, दे हैव इवॉल्व देयर करियर्स इन एक्टिंग एज वेल। तो आपने देखा होगा कि कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो अपनी कह सकते हो क्या, व्हाट डू वी कॉल दैट, नॉट गेटिंग दैट टर्म, एल्बम, हाँ, अपनी वीडियो एल्बम्स में दे आर अपेयरिंग देमसेल्व्स, तो दे डू नॉट हायर एनीवन कि आप आ जाओ आप आ जाओ आप एक्टिंग कर लो, नो, हमारी वीडियो हमने गाना गाया विल कम, ठीक है। तो वैसा कुछ सीन आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो किसी को ऐसा टाइप कास्ट नहीं करना चाहिए रिलेटेड टू समथिंग कि उनके जो जॉब है वो सब नहीं करना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड वी कैन फ्रेम अ सेंटेंस जो कहता है, डोंट पिजन डोंट पिजन होल people based on their job titles, what is happening to the screen? Okay, it's back. They might have many talents. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको लोगों को डिसाइड नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन देयर पर्टिकुलर जॉब दे आर ऑफरिंग, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया किससे रिलेटेड टैलेंट हो सकते हैं, लाइक द सिंगर्स हु आर सिंगिंग दे कैन एक्ट एज वेल। नाउ द नेक्स्ट idiom that we have come across is to pop question. पॉपिंग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि यू आर स्टैंडिंग अप इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन, इट रेफर्स टू प्रपोजल, प्रपोजल ऑफ मैरिज, ठीक है। प्रपोजल ऑफ मैरिज, इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट she had no idea that he was going to pop question at the party, ठीक है। तो पॉप क्वेश्चन मैंने तो पार्टी पर करा दिया, यू कैन pop a question in a very romantic getaway, like that sort of you can frame a sentence. Now we are moving on to the fifth idiom which says
The fifth one, it says pour oil on troubled waters. ट्रबल्ड वाटर का मतलब कुछ डगमगा रहा है, ठीक है, हिल रहा है, और यू आर पोरिंग ऑयल इन ऑर्डर टू लेट इट काम और लेट इट रेस्ट, तो दैट रेफर्स टू कामिंग, काम अ डिस्प्यूट, ठीक है, किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा अगर चल रहा है और उसको काम करा दिया आपने, उसको शांत करा दिया, तो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी पोरिंग ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर instead of what, instead of pouring we can say fat on troubled fire, like that. जैसे जैसे कि to frame a sentence what we can say that her apology poured oil on troubled waters and they were able to move forward. तो एक माफी सबको शांत कर देती है, तो वैसा ही सीन था कि अगर आप अपोलोजाइज कर लोगे तो क्या होगा, थिंग्स विल बी इन अ बेटर सिचुएशन rather than being in a worse situation. So this was a simple one. Also, you have to mark this as important. Now we are moving on to the next idiom, which says the sixth idiom, to prime. टू प्राइम द पम्प का मतलब होता है आपने कोई चीज का इनिशिएशन कर दिया, लाइक टू, वी कैन से टू एनकरेज ग्रोथ, ठीक है, तो कोई चीज का शुरुआत कर दिया और बाकी लोग कैरी आउट कर लेंगे, या फिर आपने क्या किया, आपको एक प्रोग्राम था, यू जस्ट वेंट देयर इन ऑर्डर टू इनॉग्रेट सो दैट प्रोग्राम कैन कंटिन्यू, तो दैट विल बी रेफरिंग टू व्हाट, टू प्राइम द pump. Now, in order to frame its sentence, we can say that the company invested in marketing to prime the pump in order to launch their new product. So this refers to what? To prime the pump. ठीक है, तो प्राइमिंग द पंप का मतलब क्या हुआ, आपने कोई चीज को जस्ट एनकरेज करना है, यू आर जस्ट एनकरेजिंग समथिंग टू ग्रो. Now we are moving on to the next idiom, which says to put in a nutshell. Means putting in a nutshell, जैसे you have written so many things and I am just highlighting this, that this only this part of the whole page is important, that means I am concisely stating that only this much portion is important, so this refers to what, putting in a nutshell. So what we can say is, in order to sorry, let me just write the meaning. It says that to state concisely. Now, in order to frame its sentence, we can say that the professor summarized the complex theory in a nutshell for students.
ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी जैसे कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी, जिसको कंसाइसली या प्रिसाइसली बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही ज़्यादा मुद्दे की बात बताते हुए प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को बता दिया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, we have the eighth idiom, which says to put up with. पुटिंग अप विद का मतलब होता है टॉलरेट. किस हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हो उसको बोलते हैं क्या, टॉलरेट. जैसे कि आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विद योर लेम एक्सक्यूजेस एनीमोर. तो जब आपके बॉस आपसे नाराज हैं कि आप लेट क्यों आते हो हर रोज, तब आप क्या बोल सकते हो, कि आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, आई वॉज लेट बिकॉज आई वोक अप लेट, आई वॉज लेट बिकॉज someone this, someone that, or this that. You are making every time story. So these turn out to be a lame excuse in front of a boss to whom you are actually giving these explanations every morning. So your boss says what, I am not going to put up with your lame excuses anymore. That means अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे तुम्हारे lame excuses. अब आपको लेट तक काम करना पड़ेगा या जो भी punishment होगी, you will just have to bear it. Moving on to the next idiom, we have the ninth one, which says to run amok. Running amok का मतलब होता है to run in a very frenzy way, to behave in a frenzy way, to behave या फिर run या फिर आप कह लो spread. In which way? In frenzy way, uncontrolled way, डिस्ट्रक्टिव एक तरीके से हो सकता है. ठीक है, ये सब तरीके से अगर चीजें बिहेव कर रही हैं तो उनके लिए यू विल यूज व्हाट, टू रन अमॉक. जैसे कि कोई भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा वाहियात सी कोई न्यूज है एंड दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर द इंटरनेट एंड it is running amok because it is running uncontrollably on the social media platforms. Therefore people are panicking due to certain bad effects of it, or people are mocking at those जिससे related वो news थी. तो ऐसे related you can frame the sentences. For now the sentence that I am going to frame is the kids ran amok in the park playing tag and laughing loudly. तो जो बच्चे थे वो अनकंट्रोलेबल मैनर में इधर उधर भाग रहे थे, खेल रहे थे, घूम रहे थे. कब? जब उनको पार्क ले जाया गया तब. यहाँ पर आप डिस्ट्रक्टिव तो लिख लिया है, वायलेंटली भी अगर चीजें फैल रही हैं तो भी, या फिर आप कह सकते हो अगर वाइल्डली चीजें फैल रही हैं तो भी यू कैन just use this sentence, and this happens to be your PYQ as well. So ran amok. ठीक है. Now we are moving on to the next idiom which says to set थेम्स लिखा जाए या फिर वर्ल्ड ऑन फायर. दुनिया को दुनिया में आग लगा देना. मतलब लिखा आता है ना कि तेरी परफॉर्मेंस ने तो आग लगा दी, स्टेज रॉक कर दिया, फायर यू फायर द स्टेज. तो ऐसा कुछ अगर होता है और ये दुनिया पर है, वर्ल्ड पर है, नॉट ऑन स्टेज, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग हीरोइक थिंग आपने कर दी है कुछ, जिसकी वजह से कह रहे हैं क्या, तू तो दुनिया में छा गया, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ. नाउ in order to frame its sentence, what we can say is the new restaurant is not setting the world on fire, but it's what,
It's decent. So things that maintain the decorum of the place where they are. So that refers to the decency, and decency is most important in today's era because it holds preciseness to your we can say values and your upbringing and your skills and your enhancement. ठीक है, तो उसके लिए we see decency more preference is given to decency than to the um, to the heroic things. ठीक है, so that's why I'm calling it decent instead of something heroic. So heroic things can be different. For you it can be something different to be heroic, and for me it can be something different to be heroic. But according to this idiom, something heroic refers to doing something a heroic task, like moving out of the train, jumping jumping off the valley or off the mountain. These are not heroic things. ठीक है, so this refers to what the new restaurant is not setting the world on fire, but it's decent. मतलब इतना heroic नहीं है, उसका खाना इतना अच्छा नहीं है, but the decency comes from the word being decent, and it is well represented by what? By the restaurant. So that refers to setting the world on fire. ठीक है? So this was all for today, and we shall continue tomorrow. And thank you and keep watching.